बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम यूनिट 9 सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे क्लास 8 जनरल साइंस में। मेन सोर्स ऑफ हीट क्या है? सन। यूज़ फॉर प्रोड्यूसिंग हीट बाय रबिंग फ्लिंट स्टोन्स। एंशिएंट टाइम्स में, पुराने ज़मानों में रबिंग ऑफ फ्लिंट स्टोन्स को हीट प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। When calcium oxide is added in water, heat is produced. The joule is the SI system unit for measuring heat. हीट को मेजर करने के लिए इकाई क्या है? जूल है। 1 जूल 1 न्यूटन मीटर का बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। Calorie is the heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 Celsius degree. 1 calorie is equal to 4.81 joules. 1 कैलोरी कितने का बराबर होता है? 4.81 जूल का बराबर होता है। लीनियर एक्सपेंशन क्या है? द एक्सपेंशन इन लेंथ ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन, while that in volume is called volumetric expansion. लेंथ में जो हीटिंग की वजह से जो एक्सपेंशन होता है उसको लीनियर एक्सपेंशन कहा जाता है। If we fill too much air in the tires of vehicles, they can burst in hot weather due to the expansion of the air in it. That is why there is a limit set on how much air we can fill in the tires. अगर हम टायर्स में बहुत ज़्यादा हवा भर देंगे तो इस बस्ट हो जाते हैं एक्सपेंशन ऑफ द एयर की वजह से, तो इसमें लिमिट होता है, एक महदूद हद तक हवा भर दी जाती है। एक्सपेंशन के फायदे हैं। थर्मल एक्सपेंशन हेल्प्स इन रिवर्टिंग steel plates firmly together. Fire alarms. The electric fire alarm works on the principle of expansion. The bimetallic strip of brass and iron is used. Bimetallic strip of brass and iron ये fire alarm में इस्तेमाल होता है। Bimetallic strip of brass and iron. When a fire occurs, the heat of the fire causes the brass and iron strips to expand differently. Railway tracks. The railway tracks are laid in sections with gaps between them that are joined by fish flats. Bridges are made of steel girders which expand when heated. तो ये कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन के नुकसानात हैं। इससे बचने के लिए हम ये एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हैं। Overhead telephones or electrical wires between two poles are given a certain amount of sag so that they can contract and winter without breaking. The liquids expand more as compared to solids. The liquids में expansion ज़्यादा होता है solid के बजाय। Due to this property, mercury and alcohol are used in thermometers. However, boiling point of mercury is very high and its expansion is also uniform. Mercury को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं थर्मामीटर में? हाई बॉइलिंग पॉइंट की वजह से और यूनिफॉर्म एक्सपेंशन की वजह से। When water is heated from 0 degree centigrade to 4 degree centigrade, it contracts instead of expanding. When it is further heated from 4 degree centigrade up to its boiling point, it expands. When water is cooled down from 100 degree centigrade to 4 degree centigrade, it contracts. When it is further cooled from 4 degree centigrade to 0 degree centigrade, it expands and its volume increases. The increase in the volume of water as its temperature is lower from 4 degree centigrade to 0 degree centigrade is known as anomalous expansion or peculiar behavior of water. It means that the density of water is maximum at 4 degree centigrade. जब वाटर को इंक्रीज़ इन द वॉल्यूम हो जाता है जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, उसको एनालमस एक्सपेंशन या फिक्यूलर बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं। और डेंसिटी ऑफ वाटर किस डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। थर्मामीटर क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। Thermometers have mercury or alcohol inside them. It works on the principle of thermal expansion. When the mercury alcohol get heated, they expand and rise up in the thermometer tube. In this scale, the lower center point or freezing point of the ice is marked as 0 degree centigrade या सेल्सियस स्केल में।
द अपर स्टैंडर्ड पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फ़ारेनहाइट स्केल में इन दिस स्केल द लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है? 32 फ़ारेनहाइट। और अपर क्या होता है? अपर स्टैंडर्ड पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मार्क इज 212 फ़ारेनहाइट। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। इसमें 180 इक्वल पार्ट्स होते हैं फ़ारेनहाइट स्केल में। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या है? 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। When two surfaces are rubbed against each other, heat is produced. Usually objects expand on heating and contract on cooling. In an electric iron, temperature is controlled by using bimetallic strips. The bimetallic strip is straight when it is cooled, but it bends when heated. Which material will expand on heating? Solid, liquid, gases, all of these. At which temperature volume of water is maximum? 4 degrees centigrade. Under frozen water, the aquatic life is able to survive in the water because ice acts as an insulator. In Fahrenheit scale, the distance between two fixed points is divided into 180 equal parts or division. Heat is transferred through conduction, convection, radiation. तो ये था चैप्टर 9। उम्मीद करता हूँ इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।